You see, it's dark outside and it is the end of the day, of course. I'm standing at the traffic light at the moment. So it has been raining since last midnight, constantly raining. Rather, the situation is of this kind, like rainy days. It has been raining for the last, rather, I would say, more than a week this way. My God, it's terrific to drive on these muddy roads. The roads are broken, and this some pipeline was laid, and the roads were dug up before the roads could be repaired. Though they filled up those pits with soil only, no concrete job was done, and the monsoon arrived. Every monsoon, the scenario remains the same. The roads get broken during rainy days, but this time, not the city, but the whole Punjab has witnessed this much of heavy rain after a history of 37 years. For the last so many weeks, the situation is kind of like the whole city is flooded almost all the time. The streets, they're waterlogged, and it becomes difficult to navigate from one place to another in this kind of situation. And it is hard for us four-wheelers, but the situation is worst for the two-wheelers. Very difficult, challenging, dangerous, terrible, whatever. What to say? So today I'm going to sort of, you can say, narrate a situation. In the last video, I narrated a situation where, like, how did I start my day, or how do we do in general. And today I have taken up the situation once you reach the office, like you are getting up and you are to reach the office, and the scenario in the office. होता है ना, कई बार आप सुबह उठते हो तो आपको सुबह ही सेंस होती है कि बड़ा टफ सा दिन जाने वाला है. वो आपको, आपकी सिक्स्थ सेंस आपको कह देती है. पर फिर भी आप अपनी चाय कॉफ़ी लेते हो और कोशिश करते हो कि पूरा पॉजिटिविटी के साथ ही दिन निकले. आप पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करो एंड यू रीच द ऑफिस. पर वहाँ जाके कोई और बॉम्ब गिरता है कि आज तो टारगेट ही बहुत बड़ा है, जहाँ काम ही बहुत बड़ा है. तो आपको लगता है अरे ये तो पता नहीं कितने घंटे ये कंज्यूम कर जाएगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. तो ऐसी सिचुएशन चलती है, एंड फिर भी आप मीट करते हो अपना गोल. बिल्कुल लास्ट मिनट पे आप उसको ख़त्म करते हो और फाइनली आपको लगता है अंत भला सो भला, all is well that ends well. So that is the situation, and situation on the roads is also very bad. I'm doing my English speaking practice. Oh my God, and the thank God that was a really very narrow space through which I pulled out my car. I could scroll through a very narrow passage. There is a blockade all the way on the right and left. These barricades they have placed here and there because of all these holes on the road. Really difficult to navigate, to drive. Again, a very big hole in the middle of the road. Oh my God, oh my God, oh my God. Thank God, thank God, thank God. So yes, I'm going to begin my practice this way. I got up on the wrong side of the bed, and I realized it's going to be a terrible day or tough day or the longest day. I grabbed my coffee to start the day on the right foot. As soon as I reached the office, I hit the ground running. But the boss entered the room and dropped a bombshell. So I could realize that I would have to burn the midnight oil. At the lunch time, I shot the breeze with my colleagues
and that way I had a quality time. By then, in the afternoon, I felt the pinch, but then I told myself, when the going gets tough, the tough gets going. By the evening, I could meet the target, I could finish the work at the nick of time. Then I packed up, saying to myself, all is well that ends well. Yes. Now I'm going to park my car on the side of the road because I have almost reached near to my destination. So before I enter my home, I would like to explain the meanings of all these idioms as well. So I'm parking. I have pulled over my car. Yes. With both the indicators on. Yes. So to got up or to woke up on the wrong side of the bed means जब कभी आपको एक सेंस आती है कि अच्छा नहीं है, कई बार उठते ही आपको एक फीलिंग अच्छी नहीं आती ना, नॉट फीलिंग गुड, नॉट फीलिंग पॉजिटिव, दैट इज यू गॉट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड. सो नेक्स्ट इज स्टार्ट द डे ऑन द राइट फुट. इसका मतलब होता है कि अपनी तरफ से पूरा उसको सही स्टार्ट करना. कॉफ़ी पी ली, ठीक है, अब मूड अपनी तरफ से एलिवेट कर लिया तो गुड स्टार्ट कर लिया. सो हिट द ग्राउंड रनिंग इज जब अपने पूरी एनर्जी के साथ, एंथुसिज्म के साथ आप कोई चीज़ को करते हो, शुरू करते हो. दैट्स दिस. एंड बर्न द मिडनाइट ऑयल जो है, बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन जब आपको लगता है कि आज तो, जैसे कहते हैं ना, मिडनाइट ऑयल में रात सारी जाग के काम करना पड़ेगा, मीन बहुत ज़्यादा पुट इन करना पड़ेगा अपने टारगेट को मीट करने के लिए. देन शॉर्ट द ब्रीज इज व्हेन यू जस्ट चिल करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे शप्पे मारते हो, दैट इज शॉर्ट द ब्रीज. आफ्टर दैट वॉज व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग. मीन जब औखा टाइम, मुश्किल टाइम आता है ना, तो कहते हैं ना, तब स्ट्रॉन्ग बन के निकलते हैं. तब आपके अंदर से आता है कि हमेशा होता है ना, कई बार स्ट्रेस के, जब स्ट्रेस होती है तो आपका रिजल्ट अच्छे आते हैं, आप ज़्यादा पुट इन करते हो. दैट इज़ द मीनिंग. देन यू फिनिश द वर्क एट द निक ऑफ टाइम. इन निक ऑफ टाइम, इन लास्ट मिनट पे काम ख़त्म कर लिया. एंड फाइनल वॉज ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल. कहते हैं ना, अंत भला सो भला, कि फाइनली सब कुछ अच्छा निपट गया.